Assalamu alaikum guys, this is Master of Forex and welcome back to another analysis of gold. This will be a weekly analysis और इसको बहुत डीप जाएंगे हम गोल्ड में और हम गोल्ड की सबसे पहले सडन मूवमेंट देखेंगे ये वाली कि इस मूवमेंट का मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है. दैट वाज a movement that happened on Friday. This movement it suddenly dropped like 400 to 500 pips. बहुत सारे बायर्स का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा. मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्टॉप लॉस कैसे लगा बायर्स का और प्राइस सेक्शन के ट्रेडर्स जो आप कह लें कि स्पेशली जो बिगिनर्स ट्रेडर थे जो प्राइस सेक्शन को ट्रेड करते थे खासतौर पर ट्रेंड लाइन्स को उनका स्टॉप लॉस मार्केट ने कैसे लिए. ठीक है, तो एज यूजुअल वी स्टार्ट फ्रॉम वीकली बट बिफोर दैट वी गोना गो फॉर this Forex Factory, my go-to like website for all of the news for gold. इसको देख सकते हैं. अगर मैं आपको फिल्टर दिखाऊं, फिल्टर हैज़ बीन ऑन हाई इम्पैक्ट एंड ओनली फॉर USD. तो अगर हम अब यहाँ पे देखें फिल्टर लगा के, सो दिस विल बी योर रिजल्ट प्रिटी लाइक आप कह लें कि मंडे को 24 को कोई न्यूज़ नहीं है हाई इम्पैक्ट. 25 को 7 PM के ऊपर वी हैव CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस. अगेन अगर डाटा में हाई चेंज आएगा दिस इज अ क्वाइट अ हाई इम्पैक्ट न्यूज़. अगर डाटा में चेंज आता है तो आपको मार्केट बहुत ज़्यादा मूव करती होती है. वेडनेसडे अगेन नो हाई इम्पैक्ट न्यूज़. थर्सडे लाइक 5:30 के ऊपर आपको फाइनल GDP क्वार्टर का मिलेगा और उसके बाद आपको अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स वीकली डाटा होता है. इट्स लाइक मीडियम टू हाई इम्पैक्ट न्यूज़. अगर इसके अंदर आपको चेंज नजर आएगा फ्रॉम 240K टू लाइक लेट्स सपोज इट लाइक गोस टू 260K देन मार्केट विल मूव. ओके, इसके अंदर बहुत सारा आपको चेंज की जरूरत पड़ती है मार्केट को मूव करने के लिए. एंड लास्ट वन वी हैव पेंडिंग होम सेल्स अगेन हाई इम्पैक्ट डाटा एंड दिस इज ऑन 7 PM. ओके, नाउ वी कैन गो फॉर लाइक फ्राइडे अगेन 4 PCE प्राइस इंडेक्स एंड फिर कंज्यूमर सेंटीमेंट बोथ आर हाई इम्पैक्ट न्यूज़. तो हम ग्रुप में इसको भी ट्रेड करेंगे. ठीक है, सो लेट्स गो टू आवर एनालिसिस. Let's start from always start from the monthly को जस्ट चेक करने के लिए कि मार्केट का क्या सेंटीमेंट है इस टाइम. मंथली में जैसा कि आप देख सकते हैं वी हैव 2 बिग रिजेक्शन कैंडल्स फॉर्म कर चुकी है. थर्ड इट्स ऑन 23rd एंड दिस इज द लास्ट वीक ऑफ द सेकंड क्वार्टर. सो दिस वीक विल बी हाईली इंपॉर्टेंट. इसलिए मैं हम गोल्ड के काफ़ी डिटेल एनालिसिस में जाएंगे. आपके सामने 1 वीक एंड सेकेंड वीक रिजेक्शन फ्रॉम these प्राइस पॉइंट्स. अगेन थर्ड अगर आप करंटली आप देखें तो अभी भी आपको इस किसी प्राइस पॉइंट से मार्केट रिजेक्शन देती मिल रही है. ठीक है, अगर हम सप्लाई एंड डिमांड और एनगल्फिंग थ्योरी के रूल से देखें वी हैव एनगल्फिंग बाय हियर विच इज़ फ्रेश. ओके, बट वीकली दिस इज अ मंथली. सो हम इसको जस्ट एज अ एनालिसिस के लिए देखेंगे और ये लाइक दिस एनगल्फिंग बाय इज लाइक क्वाइट इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑल द वे बैक फ्रॉम 3 अगस्त 2020 जब यहाँ पे आपके पास कोरोना था एंड यू हैड लाइक USA यूक्रेन वॉर हेयर एंड दिस वाज लाइक द क्वाइट द मूव अगेन. नाउ फोर्थ वन दिस वाज ब्रोकन. सो दिस प्राइस पॉइंट फ्रॉम 2079 to 2002 is quite important. Okay, now let's go to weekly analysis. Again अब हम क्या करेंगे, we will look at gold on a weekly prospect. Weekly prospect again this is very good for swing traders. अगर आप swing trading करते हैं और आप कहते हैं कि आप जिस चार्ट को मिनिमम देखें वीकली एंड डेली इज फॉर यू. नाउ वीकली गोल्ड ने करंटली इस एनगल्फिंग को ब्रेक नहीं कर पाई. ओके, दैट एनगल्फिंग इज स्टिल इंटैक्ट. मार्केट ने इसको मल्टीपल टाइम रेस्पेक्ट दिया है और जो की लेवल मैं आपको बार बार शेयर कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर दैट की लेवल हैजंट बीन टेस्टेड येट. व्हाट की लेवल इट इज, दिस विल बी आवर की लेवल ऑन अ लाइन. दिस इज आवर सॉलिड रिजेक्शन पॉइंट. ओके, 2277.67 इज स्टिल अप फॉर ग्रैब्स. आपको जितनी भी गोल्ड ने मूवमेंट दिया है लाइक दिस एनगल्फिंग सेल और मार्केट ने आपको इस एनगल्फिंग सेल से रिजेक्शन दी है. अगर हम इसको बात करते हैं तो अगर हम डेली में जाके देखते हैं तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं से रिजेक्शन नजर आएगी फ्रॉम दैट एनगल्फिंग सेल. एज यू कैन सी दैट दिस वाज आवर रिजेक्टिंग पॉइंट फॉर गोल्ड. ओके, सो आवर रिजेक्टिंग पॉइंट फॉर गोल्ड ऑन फ्राइडे. अगर आप H4 में जाके देखते हैं नाउ यू कैन गो लाइक सी
कि देयर इज लाइक नो पॉइंट, मार्केट ने इस आपके इनगल्फिंग सेल को भी टच नहीं किया एंड मार्केट केम बैक डाउन. ओके, दैट इनगल्फिंग सेल like wasn't like tested. Okay, see, just by a few pips was like rejected. Now let's go to weekly again and let me remove all of this. Okay, now what market is trying to do, अभी आपको मार्केट यहाँ पे इस एरिया और इस एरिया में आपको बिल्कुल ये 4 वीक से मार्केट आपको साइड वेज में नजर आ रही है. ओके, अगर हम इस साइड वेज को मार्क कर लेते हैं देन मार्केट हैज अ लोअर बेस एंड अपर बेस फॉर अ ब्रेकआउट पॉइंट. ओके, नाउ लेट्स गो टू लाइक वीकली. इसके अंदर आपके पास इतना ही एनालिसिस है एंड इफ मार्केट वांट्स टू गो डाउन bring our key level for 2277, then we have an engulfing buy here. Again, very strong engulfing buy because this engulfing buy broke this highest point of this candle. Okay, आप अगर मैं आपको यहाँ पे एक लाइन लगा के दिखाऊँ, I took this trade. See, this line was respected for like this line was again 20 pip line. I shared it and market went down like hundreds of pips. Okay, वीकली के अंदर आपके पास इतना ही मौजूद है. आपके पास एक engulfing buy है which is trying to push the market up and second is engulfing sell which is trying to push the market down. That's why market is in compression state. Okay, compression state के अंदर we need to wait for a breakout, take the entries. Okay, now अब वीकली के अंदर आपके पास currently इतना ही एनालिसिस मौजूद है. Let's go to our daily time frame and let's try to have a shape of the market. Okay, now if I remove everything, we have this engulfing buy, okay, which is still intact and fresh on a daily time frame. Now the trick here is we need to mark these zones. Okay, अब अगर आप यहाँ पे engulfing cells को मार्क करेंगे, that's quite easy. One engulfing cell is here. Okay, this one has been tested and third engulfing cell, second engulfing cell is here and I didn't mark this one because this is already been tested. Okay, now that's engulfing cell has been tested. Let me mark this one. Okay, for the future. अब अगर हम engulfing bias को mark करते हैं तो this will be like quite a tricky thing. I'm gonna mark this engulfing buy. Why I took this engulfing buy? आपके पास ये भी engulfing buy मौजूद है, but अगर आप इसको H4 में छोटा करेंगे तो it will create lots of confusion. Okay, I'm gonna take this engulfing buy because this is the point जिसको मार्केट बार बार टेस्ट करके बार बार रिजेक्शन ऊपर की तरफ दे रही है. ओके, नाउ लेट्स गो फॉर दिस वन. दैट engulfing buy that is not fresh. Okay, and that engulfing cell. See, अब आपके पास मार्केट engulfing cell और engulfing buy में आपको समझ आने लगी है कि मार्केट आपके पास कंप्रेशन स्टेट पे जा रही है. ओके, नाउ वी नीड टू गो टू DH4 to make a sense of the market. Now you're gonna see a lot of zones that can be respected or that can be broken. First zone अगर मैं मार्क करूंगा it will be that engulfing buy. Okay, क्यों मैंने मार्क किया? Because इन सारी engulfing buys में से this one is the least tested only one time. Okay, अगर आप ये वाले engulfing buy मार्क करते हैं like this one, आपके सामने एक तो ये जोन बहुत बड़ा है, सेकेंड इट हैज बीन टेस्टेड क्वाइट अ लॉट. ओके, नाउ व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना रिमूव दिस वन, वी गोना गो फॉर दिस लास्ट engulfing buy. ओके, इसको मार्केट सेकेंड टाइम आपके सामने रिस्पेक्ट दे रही है और अगर आप इस डेली के जोन को छोटा करते हैं वी हैव दिस engulfing cell और इसके ऊपर आपको ओरिजिनल वो engulfing cell मिलेगी जो अभी तक टेस्ट नहीं हुई मार्केट में. ओके, दैट engulfing cell is fresh. These both zones are fresh. Now आपने अगर किसी भी जोन की इंटेग्रिटी चेक करनी है हाफ ऑफ H4 के जोन की, यू नीड टू चेक दैट इज स्ट्रॉन्ग engulfing buy और स्ट्रॉन्ग engulfing cell. ये engulfing cell अगर आप इसको देखें दैट इज लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग engulfing cell दैट ब्रोक वन एंड टू engulfing buys. अब ये engulfing buys भी काफी इंपॉर्टेंट थे बिकॉज दिस engulfing buy broke this engulfing cell and that engulfing cell. ओके, ये आपके सामने मार्केट का रेजिस्टेंस दैट वाज सपोर्टिंग पॉइंट एंड दैट मार्केट वेंट अप. अब इस engulfing buy ने भी इसको और इसको ब्रेक किया था
अब इन सेलर्स ने इस पूरे साइडवेज को ब्रेक किया, ठीक है. सो दैट जोन बिकम्स माइटी इंपॉर्टेंट फॉर आवर analysis. Okay, now this engulfing, okay, again this engulfing buy has been broken, and that engulfing buy is the RBS resistance becomes zone support for like these two engulfing buyers. Again, mighty important zone for our selling point. Now अगर मैं आपको दिखाऊं just for your knowledge कि मार्केट ने क्या किया, और before that we're gonna mark that zone 1. Okay, again mighty important zone. Why? Because this is strong engulfing cell. Okay, momentum is like very good here, and that engulfing cell broke all of this sideways. Okay, so इसको भी हम strong engulfing cell कहते हैं. Okay, now let's mark our zones. Okay, let me just colorize it into the H4, that color, and we're gonna mark is SES. Okay, S.ES. Let me go S.ES. Let me see this. There we go. Okay, again now आपने जब भी एनालिसिस करना है, you need to be like very clear with your zones. आप जब मार्केट आपके जोन में आए तो आपको पहले पता लग जाए कि मार्केट किस जोन में है. अब ये वाली जो इनगल्फिंग बाय है, दैट इज सिंपल इनगल्फिंग बाय. ओके, बिकॉज अगर आप यहाँ से मोमेंटम को देखें, दिस मोमेंटम डिडंट ब्रेक दिस इनगल्फिंग सेल. ओके, मार्केट यहाँ पे दैट इनगल्फिंग सेल ब्रोक दिस इनगल्फिंग बाय. ओके, एंड दैट मोमेंटम, this momentum broke everything, this engulfing buy and this engulfing buy. Okay, now we need to be very careful when buying here. Okay, यहाँ पे आपको weak points मिलेंगे buy के, that can give you like 40 to 50 pips, but not more than that. Okay, but what we are going to do, we are again going to categorize our zones. मैं आपको जोन की कैटेगराइजेशन भी सिखा रहा हूँ और आपको ये भी बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है. दिस इज सिंपल engulfing EB. Okay, let's go for like simplicity. Save as, again simple engulfing I there. Okay, and you need to be very careful. Okay, क्योंकि मुझे जहाँ तक मेरा आप कहने का एक्सपीरियंस कह रहा है, market can go down. Okay, like trade from a lower point. अभी आपके सामने मार्केट का ट्रेंड इन H4 इट्स ऑन सेल. ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ फॉर योर नॉलेज कैसे रखे हुए हैं बायर्स. सो जब मार्केट यहाँ पे थी, मार्केट क्रिएटेड एन एनगल्फिंग बाय. ओके, सॉरी, मार्केट ब्रोक दिस ट्रेंड लाइन, give you a solid rejection with this hammer candle, and this candle actually proved that market wants to go up. But what happened here was this sellers here were so strong that market was pushed down 500 pips. Okay, यहाँ पे प्राइस सेक्शन और ट्रेंड लाइन के ट्रेडर्स सबका स्टॉप लॉस लगा था, बट वी आर engulfing traders, so we took the profit from like here. वो मैंने कैसे किया था वो भी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगा, फाइन ट्यूनिंग करनी. नाउ what we need to do, again we have this area as simple engulfing buy. Why? Let me show something. Let me show you. This momentum didn't break any engulfing cell. Okay, so this is a like a simple engulfing buy. जहाँ पे आपको simple engulfing buy का लॉजिक ये है कि मार्केट इस जोन में आती तो है, लेकिन मार्केट अपने ओरिजिनल ऊपर वाले ट्रेंड को फॉलो करती है. मार्केट create lower lows. Okay, so we need to be very careful when buying here. But for the sake of this analysis, let's go like below and mark some zones. This is like this one, and I will go for, let's just go back just a little bit, and let's see something here. Let's go to daily maybe, and let's find a zone. Okay, अगर आप डेली में देखें
तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग जोन है, अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक कर देती है, दिस विल बी अगेन योर highly important key level, which is stands on 2277.113. This will be a very strong key level because this is a low for a weekly candle. मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी 2 वीक से. Market took the buyers from here, then market went back up. Okay, so this key level on M1 and M5 is still fresh. Okay, तो अब हमने ये करना है, we're gonna go into H4. If market breaks this key level, what we can expect here for the market to go back down and to take the trades from that level. Again, that level is, you can call it like semi-strong engulfing buy, because this engulfing buy broke only one engulfing sell. That was here, and that I think that was respected once, maybe, yeah, once. Okay, and the momentum that it brought the market down was only for like 200 pips. Okay, so this would I would call is like our SS semi strong engulfing buy. Okay, here you can like go for like गुड टिप्स. ओके, सो अब आपको इतने एनालिसिस के बाद ये पता चल रहा है मार्केट इज मोर लाइकली टू गो इनटू अ सेल डायरेक्शन इन H4. ओके, अगर हम प्राइस सेक्शन में देखें, हम इस ट्रेंड लाइन पर मूव कर देंगे और लेट्स लाइक open a trend line, go for a trend line here. I can see what market is trying to do on a price action basis like that maybe. Okay, that's why rejection is here. Now if we extend it onto, where is the extension, maybe here, extend left. Now see, यहाँ पे कुछ था मार्केट में ना, I think that is the zone, only one. Okay, but this is again like your price action based traders के लिए, this is your trend line which is market has been respecting. Okay, अगर आप trend line के trader हैं, you need to go for a break for a trend line, retest, then market will go for a lower low. Okay, this can also happen, but as an engulfing trader, what we need to do, we need to go into the M15 time frame and mark out zones. One is this one. I'm going to take this one. Again, this is M15 strong zone here, and it's fresh. Okay, so what I'm going to do, M15 fresh engulfing and M15 fresh engulfing again. Okay, now let's take only these two zones, right? I have this zone up here, but these are the like the most zones which are most likely to be respected. Why? Because this zone has two bearish candles and this has one big bearish candle and this has only one bearish candle. Okay, so these 1 and 2 zones are most likely to be respected. अगर ये second break होगा, market will not respect this zone. Okay, that's why I'm not marking this zone. Now let's go down to the market and mark our strong engulfing sell on M15 time frame level. This will be my zone. This will be my point. It's very, like it's a straight zone. If market wants to break this, we have a zone that is here as well. Okay, so this will be my selling points to the market. Like where is fresh engulfing and M15 fresh engulfing. Okay, now let's go down here and try to make a sense of the market. We have here we have all of the zones that are tested. One is this one, again tested, and market has been, I think, respecting
this zone. But what we need to do is we need to like market 15 non-fresh engulfing, and we have is that engulfing bar here. Okay, that will be mighty important buy. Why? Because this engulfing buy also contains the traders from the trend line that I have marked, okay, right now. So what I'm going to do is I'm going to mark a trend line, and we have a point of interest here 2309 to 2306. Let's me go into H4 and we mark that trend line. Where is the chart? There it is. There you go. This, okay, this is the price. Okay, if market breaks this one, then market will go down and down and down. Okay, now let's go into M15 and mark our source candle where this all of this trend was started. Okay, it started from that engulfing buy here. Okay, that looks mighty important. Again, we need to non-fresh engulfing buy, and here we have on the upper side we have this engulfing buy, that is a fresh engulfing buy. There we go. This is now starting to make a lot of sense. Okay, and just for like something crazy happens in the market just tries to, you know, claim this 2418. We have this engulfing sell again. This is strong and fresh. Okay, why this is strong? These sellers are the breaking point of these all of this sideways. Okay, this sideways, and that engulfing buy was broken, and that engulfing buy was the support point of this resistance. So this is a mighty important zone. Okay, mighty important zone, MIZ. Okay, so I think we should conclude the analysis right around here. This will be your analysis for gold. Again, if you are an engulfing trader and if you are like that price action trader, you need to consider this trend line. Okay, this trend line is holding the market down up. Okay, again that 1, 2, and now the third point. If this trend line breaks and this engulfing buy breaks, this engulfing buy breaks, we can go for a lower low, a lower low, a lower low. Okay, this will be retested from the lower side, and market is going to claim the lower zones. This engulfing, this trend line is the only thing that is making sense in this market. Otherwise, it's a lot of sideways. Unless or until market respect this trend line and goes up, we have like sensible zones here. Okay, these are the sensible zones, and the below buy zones, it will be all will be retracement zone. Why? If market breaks this, then every zone shall be respected for like 40 to 50 pips, and market will go like for the lower zones for our weekly key level. Okay, this is the key level that can only push the market up, like it has like gone like in the past. This movement was initiated from this price point, and that price point can again initiate this kind of movements. Okay, this is the only thing that is like making sense in this market. Okay, so that concludes our analysis for gold for this week, and if you want like more analysis like this, you can subscribe to my YouTube channel, like this video, share it with your friends, and if you want to learn from me, I earn like hundreds of dollars on daily basis from gold, from currency pairs. If you want to do like proper if you want to learn market in a proper way,
you can contact me. My like WhatsApp group's link will be in the description of this video. You can contact me. You can see my number on like the screen, and we can just like make you very profitable. Okay, in the group I'm always sharing my analysis, my thoughts on a daily basis in the market. And the good news is Forex fine tuning episode 3 shall be uploaded soon. That video will be about like how to layer into a zone and how to do proper layering. And I'm gonna upload a video where I make like $3,000 profit from proper layering method on week 75. Okay, so that video will be available to you like very soon. And meanwhile, okay, this concludes our analysis. So this is Musaka Bex signing out.